Check, 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 check. Can you hear me? Hi Naveen, hello. Hello Naveen, hello. तो ये ऐड कर दे ब्यूटी की जगह पर ये स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐसे दिख रही है। भाई हेलो नवीन भाई है वहाँ पे आगे हो गया क्या चेक 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 Hello, hello. Naveen, can you hear me? Yeah, yeah, yeah. Yeah, bro. Can you hear me? Are you able to see the stat which came right now? Periyar Panthers, fire again. Yeah, 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 yeah. It's there, it's there. Awesome, awesome, awesome. Cool, cool, cool. Thank you, bro. Thanks. Yeah, yeah, bro. Sorry. No problem, bro.
हेलो
Good morning and welcome to the beautiful city of Ranchi. And we've got this wonderful drone shot just outside the Harivanstana Bhagat Indoor Stadium. And those are the three blue circles that you see where we are actually being placed for the Yuva Kabaddi Series' Monsoon edition. There we go. The drone just gets into a graphical movement and we come into match number 55, Periyar Panthers, Hampi Heroes. And I am Navin Chauri. I'll be very happy and welcoming you all for this third day of the booster round. And in the morning, we just had a very cruncher and a very close game where the Maratha Marvels won it by 2 points. And then the second game now is Hampi Heroes versus Periyar Panthers. And at 2 p.m. we have the Kaziranga Rhinos and Aravali Arrows. And before India takes on Australia in that second T20I, we have Murthal Magnets and Panchala Pride. So you can enjoy the Kabaddi without any clashes with the another game or the another series, right? So everybody's played 11 matches apart from Vijayanagaris and Maratha Marvels. They're on 12. But this game, Hampi Heroes, they will be looking at taking that first place ahead even more further in. And Periyar Panthers at 4 will have to just make sure that they hold on to this or even climb higher. So it's going to be table toppers versus number 4. Let's go down to Harshit to welcome both the teams on the match. तो थैंक यू सो मच नवीन। हम सभी मौजूद हैं हरिवंशस्थाना भगत इंडोर स्टेडियम रांची में और जिस तरह से खूबसूरत दृश्य यहाँ पर आप सभी ने देखे, ये खूबसूरत शहर पर इस देखना होगा इस मैच पर अब क्या हमारी पैंथर्स की दहाड़ काम आएगी या फिर हमारे हम्पी हीरोज की हीरोइक्स परफॉर्मेंस। तो चलिए तैयार है दोनों ही टीमों को अब मैच पर बुला लेने का समय हो चुका है। लेट्स इनवाइट फर्स्ट द पैंथर्स, लेट्स इनवाइट पेरियार पैंथर्स। और अंक तालिका में नंबर 1 टीम की अगर हम बात करें तो वो टीम है हम्पी हीरोज। चलिए उन्हें भी बुला लेते हैं जोश जज्बा और जुनून के साथ मैच पर हम्पी हीरोज। Thank you so much, Harshit. And in that dark green jerseys, the Hampi Heroes, where they will be really taking on the mighty Periyar Panthers. I say mighty because we've got the starting 7, where Gaurav Chilla still managing that left corner along with Ashish and then Ashish Chilla there. But then we have Ajay Gulia, the man to watch out for, along with Akshit Dhun and Ajay Pandit doing the raiding duties. And Ravi and Sumit Chilla will be there managing the covers. And Ankush Lohan, Prince Kumar and Harsh is the substitutions for us along with Coach Surendra and manager B. Abhijit. And now going to Harshit to improve and get in that Hampi Heroes. जी हाँ, धन्यवाद नवीन। और चलिए एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और सीधा बात कर लेते हैं हम्पी हीरोज में, जहां पर एक बार फिर से धमाकेदार टीम नजर आने वाली है क्योंकि नितिन धनकर भी कर रहे हैं वापसी लगातार। पर चलिए टीम की बात करते हैं। सोनू लठवाल वहां पर मौजूद होंगे, अजय नरवाल, रोहित नंदल, विशाल चहल, नितिन धनकर, बिट्टू बनवाला और मनदीप रोहाल। यानी कि ये बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है नवीन। बेहतरीन टीमों की स्क्वाड्स हमें नजर आ चुकी है। Because Nitin Dhankar is one big name that was really shining in that summer edition. And nothing to choose, just nothing to choose. One match away only are the Periyar Panthers and 2 wins for the Hampi Heroes in the history of Yuva Kabaddi series. They've played 5 times together. Just a slight upper hand for the boys in black and the Periyar Panthers. That probably would have been happening by that biggest Panther who was roaring all the way in that summer edition. As we've got that toss going, and I think it will be won by the boys in black. Gaurav Chilla says, okay, I will select the court on which I am standing on. And Ashish Narwal, what a name to be having there in that summer edition. But trying to get that name across is Ajay Gulia. You know, in fact, we'll be there making his presence felt. But
Akshit Dhul also a really good raider, and then coming in with 9 matches played, 95 rate points for him, and 70.37 is a rate strike rate. Very, very good prodigy in the making, isn't it, Arshit? एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा नवीन, और इनके नाम के आगे और चर्चाएं होगी, पर इस खिलाड़ी के बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट रेडर हैं। युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन में 11 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 174 यहाँ पर रेड पॉइंट्स लेकर आए, और देखिए रेड स्ट्राइक रेट हर मुकाबले में बढ़ रही है, यानी कि लगभग 81 की यहाँ पर रेड स्ट्राइक रेट आपको नजर आई, और ये है वो चमचमाती हुई ट्रॉफी। नवीन, कितना दुर्लभ दृश्य है और कितना लाजवाब ये दृश्य है। Absolutely, and along with that, don't remember that this is not the only thing that they're playing for. It's 20 lakh rupees as well. So on top of that trophy, you will be having a 20 lakh rupee prize money check as well. So for the winners, and then the referee is asking the players to just keep the warm-up going, as we will probably see the form of the teams in the last 5 games, and or rather, I think we will be going to the countdown, is it, Harshit? First, I want to thank our director and also our drone operator for giving us that wonderful outer view of Ranchi and along with Harivansh Bhagat Stadium, because that lit up a lot of mood. It's been that kind of a day where you need things to go in your way. But Hampi Heroes begin this first raid, the left to right from our screens, and it's Nitin Dhankar who's made his way in, trying to get his toe touch around the covers. He will be testing waters, does not go inside too deep inside the block line, and the defense also really playing along well with perpendicular diagonal motions. Very good it looks. Nitin Dhankar goes back empty-handed after testing those waters. So important for him to start well, as Akshit Dhul comes in now. बिल्कुल, अब अक्षय धुल यहाँ पर आपको रेड की कमान संभालते हुए नजर आएंगे पेरियार पैंथर्स से। और नवीन, चलिए एक बार फिर से समर एडिशन की हमने बहुत सारी बात की है, ये वन ऑफ द हॉटेस्ट राइवलरी होती है, और चलिए लाजवाब शुरुआत यहाँ पर हम्पी हीरोज के कैप्टन ने बता दिया है कि आज उनका डिफेंस तैयार है। हालांकि खाता दोनों ही टीमों के लिए बराबरी पर खुलता हुआ नजर आएगा, पर क्या लाजवाब बैकहोल्ड देखिए यहाँ पर नवीन, मनदीप रोहाल वहां पर मौजूद थे और खूबसूरती के साथ यहाँ पर पहला पॉइंट बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम के लिए प्राप्त किया है। See, he didn't go for the outside the block line, he went for the back hold. That's a learning now for a lot of corner defenders. As we have the man himself, Vishal Chahal, the topmost raider of the monsoon edition. And then the right cover comes across. Sumit Chilla says, Vishal, just go back on the bench for a while, because you might be the topmost raider, but I am here to make some damage to your legs. That's what he did. Very strong thigh hold. Did not have to get the support at all. And 2 each now for Periyar Panthers and Hampi Heroes. What a way to start. As you said, Harshit, this is going to be the biggest rivalry, isn't it? एग्जैक्टली बहुत ही हॉटेस्ट ड्यूअल कॉन्टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अक्षित धुल होंगे, दूसरी तरफ नितिन धनकर होंगे, और अक्षित धुल के बारे में जैसे जैसे मुकाबला आगे की तरफ बढ़ेगा नवीन, हम बहुत सारी बातों की बात करेंगे, पर मुझे नजर आ रहा है इस मुकाबले में डिफेंस वर्सेस डिफेंस, यानी कि दो टीमों का बेहतरीन डिफेंस यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएगा। मनदीप रुहाल एक बार फिर से कहते हुए कि एक नई एनर्जी के साथ तैयार है। लाजवाब बैक होल्ड नवीन। Yeah, once again, he now changed his angle. Look at that. It's probably a half block and a half hold. So it's probably that shoulder hold that he's put in. Good skills, new skills. So new narratives and new terminologies have to be involved and introduced by us. Ankle hold going wrong for Gaurav Chilla. And Nitin Dhankar starts off his bonus +1. और चलिए, उन्होंने बता दिया कि आज का ये दिन भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। इस बार जरूर लेफ्ट कॉर्नर से प्रयास करना चाहते थे, यहाँ पर शायद गौरव चिल्लर मौजूद थे। और नवीन, मैं जिस खिलाड़ी की बात कर रहा था ना, वो अक्षित धुल, तो क्या अभी भी आपको याद है नवीन, जब हम समर एडिशन के दौरान कमेंट्री कर रहे थे, अक्षित धुल वही खिलाड़ी हैं पेरियार पैंथर्स के लिए। आशीष नरवाल जब थोड़े से इंजर्ड हुए थे बीच में, चैलेंजर राउंड या फिर समिट राउंड का वो समय था, तो अक्षित धुल ने यहाँ पर अपनी जो पहली रेड आते ही डाली थी, उसमें वो लॉबी में खुद जंप कर गए थे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते थे।
तब वहां पर आपने वो बताया था और बहुत सारी उन्हें गाइडेंस दी थी कि वो ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो उभरना चाहेंगे। आप जाइए, अपना दमखम दर्शाइए, और उसके बाद क्या दमखम दर्शाया है, पर इस बार विशाल चहल को धर लिया जाएगा। Twice in 2 raids that he's been pinned down, Vishal Chahal. So he'll have to get his footwork going. And very sweet of you, Harshit, as always, just to say that, I gave him a good guidance. Yeah, right. I will take that. It didn't look like a guidance though, but I was disappointed. Because everybody loves this game so much. And even in this Monsoon edition, he just tried once. Trying for the sweeping toe touch. He has to go out. Very strong ankle hold once again on Ajay Pandit. With those covers coming in strong, and that is what we really want to see, the defense, ankle hold and the covers with the support. That is the very, very good combination of Rohit Kumar and Bittu Banwala. Right, so just going back to Akshit, he just did this even in the Monsoon edition once. I still remember, forget the summer edition, yes, even there he was a support trader coming from the bench, trying to save the team in a do-or-die situation, supporting Ashish Narwal. But he has to let that go. He has to forget it. Now he's being looked upon as a big raider. As once again Nitin Dhankar gets his hand touch very easily on Ashish Chiller and comes back. See, when you grow in that stature, in that caliber, and probably just making sure that people are following you, especially other youngsters are following you. That's so important. As we speak about Akshit Dhul, we're so close to the midline. And once again, as you said, Arshit, the defense of Hampi Heroes hasn't blinked an eye today. जी हाँ, जहां पर भी देखिए जिस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं इस बार कवर कॉर्नर की कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कवर पहले यहां पर नजर आया, वहां पर राइट कवर पर शायद अजय नरवाल, रोहित कुमार, मनदीप रुहाल का अच्छा साथ, और आप कैसे भूल सकते हैं वहां पर द बीस्ट बिट्टू को, जिस अंदाज में वो भी अपने डिफेंस में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नितिन धनकर फिर से मौजूद हैं, और अक्षित की हम बात कर रहे थे, बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को, पिछले मुकाबले में इन्होंने मराठा मार्वल्स के विरुद्ध 21 पॉइंट प्राप्त किए थे, और यहाँ पर चलिए नितिन धनकर, No, hang on. There is one defender stepping out of the end line. One defender self out. 1 point. Yeah. Heroes. Super tackle. 2 points. And also, Periyar Panthers. that is not what you wanted to see, Hampi Heroes. See, here. There we go. That was the end line that was stepped out of Ravi, and then Nitin Dhankar should have just gone back. I love the shoes. The design. It signifies something else. Probably Harshit trying to get into that franchise which has the same symbol next season is Ajay Gulia. Yeah. ग्रेट, क्या बात है। और अब देखना होगा यहाँ से नंबर 10 जर्सी जिस अंदाज में यहाँ से नजर आएंगे अजय गुलिया, एक बार पुनः अच्छे खिलाड़ी हैं, जिस अंदाज में ये देखिए एक बार फिर से दर्शाया गया है। Yeah, that is on the Bengaluru franchisee, and people know what the name is. So I'm probably from this part of the world and probably want Ajay Gulia on my side. Just putting thoughts in the brains. और चलिए अब एक और खिलाड़ी सोनू लठवाल यहाँ पर अब तैयार है। All right. Yeah, super tackle on, and Sonu Latwal's first raid, I think, in this match. Yeah, he goes back empty-handed, very intelligent. And Harshit, I wanted to talk to you because in the whole survival round you were missing, and I was just praising Sonu Latwal because it's a lot of weight, and the coaches are very happy for the Periyar Panthers. It's Surinder, and for the Hampi Heroes, it's Ramesh Saab. Oh, what a kick! What a kick by Ajay Gulia to take out the beast. Bittu Banwala. It is not easy to take him out with that kick because he's very strong in those ankle holds, and that's the reason why Ajay Gulia has been so very instrumental. Look at that, very strong toes, very strong legs, and then kicks him away. It's a super tackle situation now. So yeah, talking about Sonu Latwal, he's lost a lot of weight, and he was telling me that he was speaking to Harshit on the diet plans. और वैसे मुझे याद नहीं कब उन्होंने मेरे से बात की थी डाइट प्लान के बारे में, पर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। Right, as Vishal Chahal, did he step to the lobby? Chilla was mentioning it. It's not a good day. It's not a good day for Vishal Chahal. It's like the day with all the networks, and it's like the day with all those errors that has happened in the morning. That is sort of a day, and Vishal Chahal is sharing along that with me, I guess. Stepping into the lobby, and no, not even a single point, Harshit, to Vishal Chahal. 3 raids, he's been pinned down twice, and now he steps into the lobby. And he's done this quite often. Vishal Chahal has done this quite often, not just once or twice, because he's a tall raider, he's got long legs,
and especially when he attacks that left corner, he has that extra bit of a stride that he takes Periyar and Panthers. steps into the lobby without a connection on the defender. And always, I've seen this happen. It's always Gaurav Chilo ठीक है and the left corner who actually, मार देगा complains that to the referee. And now, ठीक है एक सुरेंद्र कॉर्नर साहब। पे ध्यान करो सर मेरा तो बोनस मारना आ रहा है बड़ा नहीं मार सकता यार अरे डाई नहीं मार सकता यार अधिकारी है तो बोनस 2-3 जा रही थी 1-2 जा रही है that's nice. कौन है बेच सक जाओ पॉइंट बोनस नहीं दे देगा ठीक है ना और थर्ड पे खेल लिए Team coach, Periyar Panthers. क्या All बात right. है, क्या सकारात्मक ओह। ऊर्जा के साथ यहाँ पर। और देखिए लगातार जिस अंदाज में सकारात्मक ऊर्जा की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे, जो कोच ने बड़े क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि भाइयों बोनस नहीं जाना चाहिए, आप इजी बोनस मत दीजिए, कोई बात नहीं, टच पॉइंट चले ही चले जाए, बट आप उनके आत्मविश्वास से खेलिए, आप अपना आत्मविश्वास दर्शाइए और लगातार यहाँ पर प्रयास कीजिए। डाइव नहीं लगा सकता क्या तू, ऐसे बोल रहे थे। और क्या पॉजिटिव, क्या मोटिवेट करने का। देखिए मोटिवेशन हमेशा आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। और नवीन, हम आपसे इस मुकाबले के आगे आगे चलते हुए बहुत सारे ऐसे स्किल्स भी जानेंगे, बट यहाँ पर मुकाबला अभी हम्पी हीरोज इस मुकाबले में 2 पॉइंट की लीड के साथ हैं। Yeah, as Ajay Pandit comes on, see what Surendra Saab also said was he's played it exactly right on the situation of the game. He says that it's just 2 points and you just have to play on the do or die raid. Don't go out, don't get caught, and more importantly, if you're more than 5 defenders, if there is a revival that's going to happen, do not let go of the bonus. As Sonu Latwal also, yeah, I love the shape that he is in now, because he's reduced more than I think 5 to 6 pounds, direct, and Periyar he's come Panthers. back very, very strongly. And now Ajay Gulia in a do or die raid, only 4 to contend with. Can he get something out of this? It's going to be real interesting as Ajay Narwal is in that right corner. He goes and attacks it and also gets another point. What a way to turn points. away and Periyar then turn Panthers. in. It's That's not number easy 5 and 11 against out. Ajay Narwal and Mandeep Ruhal. Both of them. See, there is double skill shown here, Harshit. There, the hand touch, then he turns in and then turns away. Direct, Oh. heroes. जी हाँ, विभिन्न स्किल्स का यहाँ पर Latwal. प्रयोग करते हुए नजर आए। और अब चलिए सोनू लथवल यहाँ पर नजर आएंगे। क्या हैंड टच इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है और इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है कि यहाँ पर कवर के खिलाड़ी को बहुत अच्छे अंदाज में टच पॉइंट ला पाते हैं। बहुत अच्छा एक बार फिर से दर्शाया। और नंबर 4 जर्सी यानी कि लेफ्ट कवर रवि को अपना शिकार बनाया। देखिए बहुत अच्छा स्ट्राइड करेंगे, अचानक से टर्न लेते हैं और बहुत अच्छी स्ट्राइड है, बहुत अच्छे अपने आर्म को स्ट्रेच करते हैं। तो नवीन, मेरा अब आपसे जरूर सब्स्टिट्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। 13 नंबर के खिलाड़ी अंदर आते हुए नजर आएंगे, शायद आप डिफेंस को और ज्यादा पुख्ता करते हुए नजर आएंगे। जी, अमित गोलिया अंदर आए। They want to strengthen the defense there because it's super tackle, and you do not want Sonu Latwal, who will not participate in a defense, and that's the reason why it is Rohit Kumar on the far end, and then it is Amit Gulia on the near end of us, and then in the right corner and the left corner, that we'll have to say, and Nitin Dhankar in the chain. See, that's a very good move by Ramesh Saab. It's a very, very good move. And yes, Sonu Latwal, when he spreads his arms, he becomes a different raider. And he becomes a very dangerous raider for the opposition's defense. And somewhere, Periyar Panthers would have thought that, why does Ravi struggle always? If you really have to pick one weak link, that's a reverse ankle hold by Gaurav Chilla. And that's a skill for any left corner, because the right raiders will take a little extra time in turning themselves. Beautiful ankle hold on the left. Look at that. Left leg gone. And a reverse ankle hold. You just can't escape that. Because that's it. Your weight is on the left leg when you're turning. And when you attack that, that is a closed doors for the Raiders. Now, Ajay Gulia, super tackle. What do you think, Arshit? देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से डिफेंस एक बार फिर से नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक बार पुनः यहाँ से पेरियार पैंथर्स और इस मुकाबले में अब लीड भी शायद बनाते हुए नजर आएगा। एक और पॉइंट यहाँ से मिलता हुआ नजर आया है अजय गुलिया को आसानी के साथ। देखिए नंबर 13 जर्सी वहां पर मौजूद जरूर थी, अमित गुलिया थोड़ा ज्यादा वहां पर उन्हें फोर्स कर उन्हें पुश किया और आसानी के साथ अब सोनू लथवल एक बार पुनः इन पर जिम्मेदारी होगी। 8 नंबर जर्सी रोहित कुमार को बाहर भेजा गया है, रिवाइवल लाना होगा। सोनू लथवल टच पॉइंट बहुत अच्छे अंदाज से लाते हैं, थोड़ा सा फुट मूवमेंट और बेहतर देखना चाहेंगे और वो शायद जैसे जैसे मॉनसून एडिशन और बेहतर आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे शायद आप इनसे और देखने को मिलेगा, क्योंकि टच पॉइंट लाते हैं, जब अपना हैंड टच करते हैं वो बहुत शानदार करते हैं। थोड़ा सा फुट मूवमेंट and now he has to save the team, Harshit. Now that is more important.
because it's a very tight game. And if Hampi Heroes succumb to that all out now, it's going to be tough. Because Periyar Panthers will not let that slip away very easily. Somewhere, he has to run in hard, but he just goes inside the arms of Gaurav Chillers and say, Bonus okay, point. bhai, Hampi Heroes. जादू Hampi की Heroes चप्पी दे all दो out. मुझे. 1 That's plus what 2, 3 happened there. point. Periyar First Panthers. all out on Hampi Heroes. और चलिए वहां पर गौरव चिल्लर, अजय गुलिया सभी वहां पर मौजूद थे और आसानी के साथ वहां पर दरा दबोचा गया है। यानी कि इस मुकाबले में पहली मर्तबा ऑल आउट हमें देखने को मिलेगा। हम्पी हीरोज यहां पर ऑल आउट हो चुके हैं। यानी कि पेरियार पैंथर इस मुकाबले में अब 3 पॉइंट की लीड के साथ नजर आएगा। सब्स्टिट्यूशन जरूर होगा, अमित गुलिया को एक बार फिर से बेंच पर भेजा जाएगा और रोहित कुमार लेफ्ट कवर के खिलाड़ी को एक बार पुनः बुलाया जाएगा। अक्षय धुल, इन्हें भी अभी तक उस तरह का प्रदर्शन देखने का नहीं मिल पाया है पेरियार पैंथर्स से। पिछले मुकाबले में इन्होंने अपनी टीम के लिए 21 पॉइंट प्राप्त किए थे। अच्छे युवा रेडर के तौर पर अब उभर रहे हैं नवीन। ये Yeah, see again, this is what I was telling about Periyar Panthers. See, they will not let it go. Rohit Kumar, very high line defense on that left cover. Should understand that Periyar Panthers have 1 point. got the Periyar Panthers. taste Jersey of the number 8 blood. out. They will not allow the Hampi Heroes to come back. So you will have to go back in the defense, play very defensively, and I want this lad to fire. He's not got a single raid point yet, Harshit, and it's not right. Again! Every time it was the left corner that was attacking him. Now the 1 right point. corner gets him out. Periyar Panthers. And that is not a very nice sight. आसानी के साथ एक बार फिर से यानी कि विशाल चहल आज चहलकर्मी करने में थोड़ा सा अभी तक नासमर्थ रहते हुए नजर आए हैं। और 16-11 और बिल्कुल आपने सही कहा, जिस पॉइंट की आपने बात की थी ना, पेरियार पैंथर्स आसानी के साथ लीड गवाती नहीं है। चाहे वो समर एडिशन हो या फिर अगर आप बात करें जिस अंदाज में मॉनसून एडिशन में भी आपको नजर आए, पेरियार पैंथर्स नोज हाउ टू विन द मैचेस। जो हमने बात बहुत ज़्यादा पहले भी की थी, अभी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वाइवल राउंड में भी आपको नजर आए थे। पेरियार पैंथर्स की सबसे बड़ी उनकी जो ताकत है ना, वो ये रहती है कि उन्हें वो गेम के पेस को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। और अगर गेम के पेस को अच्छे से रीड करता है कोई खिलाड़ी हम्पी हीरोज से, तो ये वो है नितिन धनकर। 9 नंबर जर्सी, बड़ा अद्भुत खिलाड़ी है। अब देखना होगा कि एक बार फिर से अपना परचम लहरा पाएगा। No, see, he's got two responsibilities. He'll have to bring back the Hampi Heroes in the scoring, and then he'll also have to do what Vishal Chahal has been struggling to do today. Goes in, does not go out. Oh, Ashish Chiller. 1 point. He was Hampi Heroes. You Jersey were number actually 14 supposed out. to fox the raider, but the right cover went across very nicely. Sumit Chiller stuck the trap, and the entire team is unhappy with Ashish Chiller's move. Oh, you're just falling into your own trap there. एग्जैक्टली, वहां पर वो स्वयं भी बहुत ज्यादा नाखुश नजर आए। और अक्षत अब एक बार फिर से तैयार हैं, लेफ्ट रेड करते हुए नजर आएंगे। राइट कॉर्नर पर वहां पर बिट्टू मौजूद थे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा शायद क्या वहां पर 1 सेकंड लिया उस एंकल होल्ड को करने के लिए। और हम बात जरूर करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट लेग पर आपके लिए वेट जरूर होता है, पर आसानी के साथ वहां पर शायद थोड़ा सा मिनी सेकंड जिसे आप कहते हैं। देखिए यहाँ पर, और वो दूरी भी थी, वो डिस्टेंस भी शायद थोड़ा सा क्या ज्यादा था वहां पर नवीन के, जिसके चलते ये डिफेंस इतना बेहतर नहीं बन पाया। All those points are right, but the important factor there is Akshit Dhul did not take much on the landing foot. He did not put a lot of weight onto the turn. He was not in a bending position. He was almost upright and goes in as Nitin Dhankar once again gets Ravi out. 1 So point. Ravi is Hampi being Heroes. that one Jersey weak number link. 4 out. But going back to that reverse hold which Bittu Banwala missed, because when Gaurav Chiller put that ankle hold on Vishal Chahal was actually pressing his left leg too much and putting a lot of weight, and that's where the left corner got a little bit of a time. But Bittu did not get it against Akshit Dhul because Akshit Dhul was not too low and bending. He was almost upright, almost ready to kick the ankle hold and go away. See, for the Raiders, there's two kinds of kick. When once, of course, you go to that lateral way of kicking and that goat kick, what we always keep saying, and the scorpion kick. And the other one, very importantly, is the kick on the ankle hold when it is attempted. So that is what the Raiders cannot do when you go to a reverse ankle hold. If you are going to the leading leg rather than the leg which is there, bearing your weight, then it becomes easy for the Raider. But then that is the effect of that reverse ankle hold, which Gaurav Chiller is very successfully put on Vishal Chahal. But now Nitin Dhankar, Arshit, can he bring the Hampi Heroes back? He's done it well.
जी हाँ, उन्होंने भी इतनी ही बारीकियत के साथ पॉइंट लिया 1 जितनी point. बारीकियत के साथ Hampi नवीन Heroes. आपने बताया। Jersey number 10 out. जो तकनीकी तौर पर और जो टेक्निकलिटीज आपको पता है कबड्डी के, बिल्कुल आपने सही बताया कि वहाँ पर दो प्रकार की किक होती है। बतौर रेडर कई बार आप वहाँ पर किक जब टच पॉइंट लाने के प्रयास करते हैं, और एक बार आप किक वहाँ पर झटका सा देते हैं जब आप एंकल होल्ड से स्वयं को बचाना चाहते हैं, और जो आप रॉन्ग फुट से नहीं करते हैं। अक्षित ने जरूर तारीफ करते हुए नजर आए थे। क्या इस बार मिड लाइन को क्रॉस किया है नवीन? क्या यहाँ पर क्या मिड लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आए हैं? मिड लाइन पर हाथ जरूर गया है, कोच को भी मजबूर कर दिया है अपनी सीट पर खड़े हो जाने के लिए। Surinder Saab will be very, very happy as they are counting man. They are counting man, and also they want to discuss. The referees want to discuss. Bhai sahab, mic cover mat kijiye, please. Now, what is the fine for the referees if they are covering the mic, Harshit? You should talk to them. I will. Raider out. Let's see the 1 decision. point. Ah, Hampi Heroes. Raider out. Finally, Hampi Heroes will breathe a long, breather. There we go. Akshit Dhul, right hand. Oh my God! That's going to be the raid of the match and the raid of the season. Let's listen it. 3 points. All right. टीवी अंपायर पेरियार पैंथर का मांग है रेडर से 3 अंक, जबकि हमारा निर्णय है रेडर आउट 1 अंक हम्पी हीरोज। कृपया रिव्यू करिए। Gaurav Killer has actually asked the right review. I will love this. There we go. Rohit Kumar comes in, left cover, turns the pages, Akshit Dhul. Then a lot of support comes across. Before the hand touches the midline, there are 3 defenders already on Akshit Dhul. And then has the middle finger, has that longest middle finger crossed the midline, will be the big question now for the TV umpire. It looks like it. It looks like it. But for me, yeah, and there you see Nitin Dhankar's reaction. Harshit, did you see number 9? Nitin Dhankar was actually holding his head and saying, "Arre re, touch kar diya, cross kar diya." So that shows, see, that is what I keep saying. Every time the player will know if he is out, if he is run out, if that is a no ball, if he has left a catch, all that, and even in Kabaddi, the players will know what the real scenario is. And the body language sometimes is a very, very good gesture for the reviews and the TV umpires to take a call. I'm just putting in ideas. I'm not making any decisions. चलिए यहाँ पर देखना होगा जिस अंदाज में आपने बात की है, क्या हल्का सा वहाँ पर महीन सा, हालांकि यहाँ पर समय निश्चित तौर पर लगना थोड़ा सा, आप कहते हैं ना कि वो सही होगा, क्योंकि बहुत ही नज़दीकी मामला है ये। और रेड इसलिए भी इतनी बड़ी है क्योंकि हम्पी हीरोज़ के 3 खिलाड़ियों पर बात है। यहाँ पर अक्षित ने अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक दिया था, सब कुछ लगा दिया था। और आपने बात की सुन लटवल की कि वो वेट कम कर आए हैं। अक्षित इस मॉनसून एडिशन में वजन थोड़ा सा और बढ़ा कर आए हैं और अच्छे बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पर देखना हो क्या बैलेंस यहाँ पर नज़र आएगा। 3 पॉइंट प्राप्त क्या करेंगे अक्षित धुल, सभी की निगाहें होगी 3 डिफेंडर्स पर। यहाँ पर बात है क्या वो हल्का सा स्लाइड आगे गया था, सफर रहा 3 पॉइंट। Oh, as I expected, super raid, Arshid, and that's going to be the raid of this game. पेरियार पैंथर I'll be changing a lot of course coming across. Rohit Kumar, right cover, left cover, and then also 11-5-8. the left corner goes out. And the moment that happened, Surinder Saab knew it. Surinder Saab and the whole bench very, very clearly knew it that it's going to be a super raid. बिल्कुल। और ये And मुकाबला, Nitin Dhankar's reaction actually sealed the story for us. और मुझे ऐसा क्यों लगा कि निश्चित तौर पर ये बात भी कहीं ना कहीं टीवी एम्पायर ने कंसिडर की होगी। आपको लाइन थी, बट चलिए Hope जोक he's सपाट, not listening to me very closely. तो चलिए जोक सपाट एक बार फिर से चलते हैं। और जिस तरह से हमने तारीफ की हमारे टीवी एम्पायर्स की, चाहे हमारे डायरेक्टर्स की और हमारे पूरे यहाँ पर कैमरा क्रू की, इस बार देखना होगा नितिन धनकर क्या शायद बोनस की यहाँ पर बिल्कुल मांग करेंगे और प्राप्ति भी करेंगे। और बोनस सेव करने के लिए शायद यहाँ पर पेरियार पैंथर्स चाहता है, क्योंकि जानता है कि फर्स्ट हाफ अब लगभग समाप्ति की तरफ है। 1 पॉइंट अगर यहाँ से कैसे भी बच जाए, क्योंकि वैसे भी रिव्यू आने वाले समय में आपके लिए बचेगा नहीं, शायद इसी वजह से यहाँ पर क्या रिव्यू की मांग की है। Yeah, now see one review which I really appreciated them. जबकि हमारा निर्णय है बोनस अंक। कृपया रिव्यू करें। Yeah, so now just see, look at that. It's not a do or die raid. It's not a, come on Ajay Gulia. You went in for that bonus in front of Gaurav Chiller. It's a clear one. I feel it should be given because the landing foot is probably crossed
the bonus line and the trailing foot is in the air. But let's see what the TV umpire says. And I'm really hoping in the challenger round going ahead, it should be a review per match, not a review per half. See what happens is, see, I understand it takes up a time. That is the most valuable thing in any game, you know. And also for people watching, they will probably also be feeling that, अरे मतलब एक bonus point के लिए review क्यों? If it is not a do or die raid, if it is not a last man standing, if it is not a, see, it's very clear. It's very clear. See, it's beautiful. Perfect way of executing a bonus is this by Nitin Dhankar. He's probably got it. Just because you have it and you just going for it. सफर रहा, no bonus. Periyar Panthers. Oh, the TV umpire thinks something else. I thought the leg was outside the bonus line. Right? और शायद के वहाँ पर See the confusion. पूरी तरह से पार किया था, शायद उसी बारे में यहाँ पर चर्चा. No, I think there's a decision. Unsuccessful. Yeah. Bonus point. Hampi Heroes. Periyar Panthers. मैं वही सोच रहा था. That was a picture perfect example that you can show it to any youngster for a bonus point. How can it be unsuccessful? Come on. Just a communication error. And Ajay Gulia has eaten up around a minute and outside the match timing. So that is what happens, you know, where your momentum is being changed, your thinking has been blocked, and then you'll have to refresh, rethink. And Kabaddi is not that sort of a game. It's not like football or hockey where you have 4 quarters to make your decision, and 10 minutes you can plan it properly, and even there you can just keep the ball with you and keep dribbling and then waste your time. It's not that at all. And that's why Kabaddi has become so famous, because it plays on the game, it plays on the time. It is so important to take those reviews very judiciously. As Nitin Dhankar comes in for the last raid of the first half, and Hampi Heroes will be feeling the pinch of it. And once again, Gaurav Chilla has attempted that ankle hold, and then Sumit Chilla comes in for the dash. Nitin Dhankar goes out. 1 point. And that is not the way that Hampi Heroes will want to end their first half. It is Periyar Panthers with the momentum, and with 2 raiders not firing at it. 3 points. That is not. Oh, right. Now Hampi Chillers want a review. That's a good one. Now that's a good one. और चलिए सुनते हैं यहाँ पर क्या रिव्यू की मांग करना चाहेंगे. टीवी अंपायर हम्पी हीरोज का मांग है रेड से 3 अंक, जबकि हमारा निर्णय है रेडर आउट. कृपया रिव्यू करें. Yeah, Mandeep Ruhal wants this to be on an even Stevens way. He's just felt that Nitin Dhankar crossed it. And there you go. Gaurav Chilla came in with the ankle hold. Then Sumit Chilla came across from the right cover. And then Nitin Dhankar. Where is his right hand? Where is his right hand? It is kind of outside the lobby. That's what I felt, like the referee, that he's been gushed out of the court. But the right hand never came. He took a little more, or rather a half second extra to put his right hand across. But did not do a Akshit Dhul there. Probably this might be a little more tough than what it looks like. See, now this is a good review, because Hampi Heroes are trailing by 5 points. You need those points, and Vishal Chahal is struggling, and Nitin Dhankar, it's a 3-pointer raid that they are contesting for. See, when you argue about 1 review per match, what happens to these situations, isn't it, Arshit? When you have 1 unsuccessful review per half, teams like this also take good reviews. So probably it's going to be unfair when we say it's 1 review per match. जी बिल्कुल. और कल हमने देखा भी पंचाला प्राइड का एक मुकाबला हमने देखा जहां पर वो एक हाफ में 3 से 4 रिव्यूज लेते हुए नजर आए. एक हाफ में 4 रिव्यूज, और उसमें से 3 सक्सेसफुल थे, और एक सिर्फ उन्होंने अंतिम इसी प्रकार से 10 सेकंड बचे थे वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए शायद उन्होंने रिव्यू लिया था. पर एक हाफ में 3 रिव्यू का सक्सेस भी होना, ये कहीं ना कहीं इस बात पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर करता हुआ नजर आ सकता है. Yeah, see, and also it's a question of where you are trusting the referee, where you are trusting the referee, because the referee is very experienced. He's also played Kabaddi a lot in his life. He's been everybody, not just 1 or 2.
all the referees in the monsoon edition, they have a lot of experience under their belt. They come in with a lot of love towards the game, and they know how to conduct this game in the proper legal manner. So how many times can you question the referee's decision? Per half, isn't it? I still feel we'll have to go with that one review per match. See, voice is not clear, then you're taking up a little bit more time, anxious moments being रिव्यू lost. असफल रहा, रेडर आउट, 1 पॉइंट पेरियार पैंथर. Yeah, as we felt. आप अपना रिव्यू का अधिकार खो चुके हैं. Okay, so but the second half will come in live as the first half timing is done. Probably. Yeah, there we go. Change the code. So Vishal Chahal not on court, Nitin Dhankar not on court. Right, that's a very big blow for the Hampi Heroes. Against Periyar Panthers should be 21, if I'm not wrong. We'll check that again. Because Nitin Dhankar was out. हाँ 21 पॉइंट पर वहां पर निश्चित तौर पर नजर आएंगे और 15 पर शायद आपको हम्पी हीरोज नजर आएंगे, और उसमें से 4 पॉइंट रेड में यहाँ पर अजय गुलिया लेकर आए हैं. जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पर 21-15 पर यहाँ पर आपको हाफ टाइम तक का स्कोर नजर आएगा. और समरी की अगर हम बात करें तो 10 रेड पॉइंट्स यहाँ पर पेरियार पैंथर्स के पास, 10 ही एमपी हीरोज के पास है. पर एक बार फिर से दुगुने टैकल पॉइंट्स यहाँ पर पेरियार पैंथर्स के पास है. यानी कि आज डिफेंस में बहुत अच्छा करती नजर आ रही है पेरियार पैंथर्स की डिफेंस की टीम. सुमित चिल्लर 3 पॉइंट ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, गौरव चिल्लर के खाते में पॉइंट है 2, और हर खिलाड़ी चाहे रवि खत्री, अजय पंडित और अजय गुलिया, तीनों खिलाड़ियों को यहाँ पर पॉइंट मिले हैं. तो हम्पी हीरोज के डिफेंस को अब थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, नितिन धनकर का साथ निभाना होगा विशाल चहल को. Yeah, we'll just slip into a short little break and we'll come back soon. Stick on with us. ओके सो वन मोर टाइम वेलकम बैक गाइस. स्वागत करते हैं आप सभी का, और लाजवाब कोऑर्डिनेशन यहाँ पर दोनों ही टीमों और दोनों कॉर्नर्स के बीच में है और दोनों ही कमेंटेटर्स के बीच में भी है. चलिए नवीन, स्वागत है आपको कमेंट्री बॉक्स में. Yeah, thank you Harshit and Nitin Dhankar. 10 raids that he's put in, 7 raid points. So that is what we will be looking at, because Vishal Chahal is not firing and it's all on Nitin Dhankar. But what is the hurry, or rather I should say, what is that not going right for Vishal Chahal? It's because he's trying too hard. Is he been intimidated, or rather is he been worried that Nitin Dhankar is on the mat? He has to perform well. Is there a pressure on him? He's on court for that super tackle. He's there in the chain with Sonu Latwal, and I will want Akshit Dul to go to the Raiders. I will want him to go to the Raiders because it's not going to be easy against the defender there, because he can backtrack well. That's a trick being missed. That's a trick being missed by Akshit Dul. Sonu Latwal, Vishal Chahal, both of them were there. As there's another green card. During the raid, yeah, during the raid, no coaching. Yeah, that's fine. So talking, coaching, everything can happen from the commentators, not from outside across the court. एग्जैक्टली. और चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा वहां पर कि विशाल चहल क्या कहीं अति प्रयास तो नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल आपने सही कहा. कई बार खिलाड़ी, वैसे अक्सर शायद हो या फिर ना हो, परंतु कई बार अक्सर खिलाड़ी पर ज्यादा जिम्मेदारियां वहां पर आ जाती है जब उन पर मौजूद है टॉप रेडर का खिताब अभी तक वहां पर उनके पास मौजूद है. पर अब देखना होगा. विशाल चहल कह रहे हैं कि चलिए अब विदाउट प्रेशर वो खेलने वाले हैं, विदाउट जिस तरह से आप कहते हैं ना वो हेजिटेशन, वो जो झिझक अभी तक नजर आ रही थी, ये उनकी सबसे मेन स्किल है. बहुत अच्छे और बहुत ही इजीली यहाँ पर टो टच करते हैं, निगाहें चारों तरफ बनाए रखते हैं और डिफेंडर्स के साथ खेलना किस तरह से ये अच्छी तरह से जानते हैं. बहुत अच्छा टो टच किया है, लेफ्ट कॉर्नर को अपना शिकार बनाया है विशाल चहल ने, और एक दूसरे हाफ में पहला पॉइंट प्राप्त किया है. Nice. Ajay Gulia actually got the toe touch on the left corner, and he
just found a way, just found a gap to run through. Look at that. That was a nice kick, and then he found a gap, but then the defense are actually just holding on to the back of Ajay Gulia, just nullifying him down on that turn. And now Vishal Chahal, see, it's a better half for him. He's moving quicker, he's moving fast. In the first half, it was just one bonus point. And now, second consecutive touch point. This is what the Hampi Heroes need. 1 point. And why not Hampi fire in Heroes. tandem? Jersey number 3 Nitin out. Dhankar also fire, Vishal Chahal also fire. Both of them with a double barrel for Hampi Heroes. Fire it out. Because that is what is important. The table toppers there, Hampi Heroes. और देखिए कहीं इन दोनों को अगर साथ की जरूरत पड़ गई तो वहां पर सोनू लठवाल भी मौजूद है 2 पॉइंट रेड में, वो भी अभी तक शायद अपनी टीम के लिए लेकर आए, तो बहुत अच्छा रेडिंग ट्रायो यहाँ पर नजर आता है हम्पी हीरोज के पास। बिट्टू, ये एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर डालने का प्रयास था बिट्टू का, बहुत ज्यादा आप डिस्टेंस ट्रेवल कर आ रहे थे, बहुत ज्यादा समय आपने अक्षित दुल को यहाँ पर दे दिया था और अच्छी तरह से अक्षित ने सही समय पर वहां पर टर्न लिया, सही समय पर वहां पर कॉर्नर के खिलाड़ी पर नजरें जमाई, अच्छे अंदाज में यहाँ पर आउटवर्ड टर्न लेते हुए नजर आए और आसानी के साथ यहाँ पर एक पॉइंट और प्राप्त किया है अपनी टीम के लिए। Yeah, along with the turn, as Vishal Chahal is waiting now, Akshit, he did not have to do much because of the wrong tackle. There we go. Look at the confidence now. And Ravi once again becomes 1 that point. weak link Hampi for Heroes. the Jersey number Hampi 4 Heroes out. to take another point against him. Vishal Chahal has done well. But going back to that Akshit Dul's raid, it was the error from Bittu Banwala. It was so close to the mid-line. And then Akshit did not have to, put a lot of effort. And now once again, he can reduce men. But this is not what I'm liking to see. Vishal Chahal on the right corner. No, that is not what you have to do. Vishal Chahal and Nitin Dhankar, both of them. So Ankit is being given a free invitation for the bonus. And he's also probably got it. Looks at the referee. Does not get it. It is like a free meal that could have been lapped upon. Oh, Akshit Dhul somewhere missing out the trick. बिल्कुल एक मौका था अक्षय दुल के पास, यहाँ पर राइट कॉर्नर के नीचे से यहाँ पर बोनस चुरा सकते थे क्योंकि इनके खिलाड़ी पर नितिन धनकर मौजूद थे और कॉर्नर पर वहां पर विशाल चहल थे और नितिन धनकर इस बार रेड करते हुए नजर आएंगे। राइट रेड के साथ किक लगाने का प्रयास है, समय थोड़ा सा लिया है, यहाँ पर डीप जाने का प्रयास था, डिफेंस का यहाँ पर अच्छा संयम नजर आया, बहुत ज्यादा अति प्रयास करते हुए नजर नहीं आए। अब एक बार फिर से सेम सिचुएशन है, अक्षित धुल एक बार फिर से लेफ्ट रेड करते हुए नजर आएंगे, यानी कि राइट कॉर्नर का काम। और देखिए कहां पर खड़े हैं नवीन, देखिए बोनस लाइन लगभग वहां पर अवेलेबल है अक्षित दुल के लिए, बहुत ज्यादा पीछे वहां पर खड़े होते हुए नजर आएंगे। क्या अक्षित दुल इस बार बोनस का प्रयास कर सकते हैं? Yeah, not just Hampi Heroes, Arshit. I've seen a lot of teams make this error. Having your raiders in the wrong places, and Akshit Dul falls into that trap of Mandeep Ruhal's strong hands with the trap only, I said, because it was only 1 point. Mandeep Ruhal's Hampi Heroes. strong. I think he just got him into his trap. Look at that, 2 hands, and then he got a little bit of support from Sonu Latwal in the legs. But I've seen a lot of teams make that error, putting your raiders in the corner positions, and especially yesterday we saw Gautam Tomar in manning a left corner position, so important. Super tackle situation, Sumit Chilla, and also 1 and 14. Ashish Chilla will not be able to 2 stop point. Vishal Chahal now. Hampi Heroes. This is Jersey scary number 1 situations and now for the 14 Periyar out. Panthers. और एक बार फिर से कड़े मुकाबले की तरफ बढ़ चुके। देखिए जिस तरह से यहाँ पर गैप निकाला, वो बहुत ही कम वहां पर गैप ढूंढ लिया था और रास्ता ढूंढ लिया था यहाँ पर मिड लाइन की तरफ जाने का, और चेन में क्या शायद जाना चाहिए था। अक्सर हम बात करते हैं इस प्रकार से जब आप पर शायद वहां पर फ्रंट ब्लॉक करने का प्रयास था, इसी वजह से वहां पर एक गैप मिलता हुआ नजर आया और उस गैप को बड़ी आसानी के साथ भेजते हुए नजर आया विशाल चहल। और हमने इनके बारे में बात ही की थी, इजी बोनस जरूर देंगे निश्चित तौर पर। 13 नंबर जर्सी यहाँ पर तैयार है पेरियार पैंथर्स के लिए। Ankush Chauhan is coming to save the team from an all-out. He's a very good raider. He was there in the starting 7 a lot of times, and now under 7 seconds. You can say now, Bonus you can point. say Periyar Panther. that it is Periyar a Panther tackle all out. point 1 by plus 2, Vishal 3 Chahal. point. Hampi Heroes. You can say that, but no. What was the situation? Periyar Panther. Look at that. Who put his hand first? There you see. Once again, it was the right corner, Bittu Banwala. Substitution. Bittu Banwala was Periyar there, Panther. and then Vishal Chahal 16, came in from that right in 13 position, out. and that is why it was successful. Not when Vishal Chahal is on the right corner. And Hampi Heroes have made a big comeback by inflicting the all-out on Periyar Panthers in the second half, and the teams should really get this
digested under their strategy because they have to keep right man in the right place. If not, this happens. This happens very, very easily. Ashish Chiller on the right corner this time. और देखिए ये खिलाड़ी इसलिए भी इतना दमदार है, इतना धमाकेदार है क्योंकि इनकी सबसे बेहतरीन स्किल्स में से ये है कि ये जिस तरह से टच पॉइंट लाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर टच पॉइंट लाने का इनमें दमकम है। राइट कॉर्नर को अपना वहाँ पर शिकार बनाते हुए नजर आएंगे। आशीष चिल्लर शायद वहाँ पर मौजूद थे, अब जरूर आपको राइट कॉर्नर पर वहाँ पर बिट्टू बनवाला नजर आएंगे। See, that is what is nice. See, when you had 6 defenders on court, what was the necessity for Vishal Chahal to be in the right corner? Ajay Gulia now gets Bittu Banwala, does not go back in that chain. See, no retrieving skills at all. He was just standing there like a statue. And Ajay Gulia said, okay, let me click a picture of yours. And takes 1 point away. तो चलिए अब बिट्टू को वहां पर जिस तरह से बाहर की तरफ भेजते हुए नजर आए, पर अब सोनू लठवाल यहां पर आपको नजर आएंगे। द हल्क के नाम से इन्हें जाना जाता था पिछले एडिशंस में, अब उस तरह से क्या वहां पर प्रदर्शन को एक बार फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे। सबसे मेन स्किल्स में से है इनके पास, ये बहुत अच्छे अंदाज में हैंड टच करते हैं, खासकर लेफ्ट कवर पर आप लगातार ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रगल करते हैं अपने फुट मूवमेंट्स के साथ, पर उसमें इंप्रूवमेंट है। देखिए नवीन, जिस तरह से उसमें हल्का हल्का इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है, यानी कि खिलाड़ियों को जहां पर थोड़ा सा समय मिला था वहां पर इन्होंने लगातार अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए लगातार प्रयास किए और कड़ी मेहनत की है। No, see, because why is he moving well is because he's shed out extra baggages. I think the proteins have replaced the carbs in the diet. So he's lost a lot of carbs, he's lost a lot of extra baggage, and that's why he's moving well. And then when he opens up that arms, he becomes even more dangerous. But looking dangerous in the second half is Vishal Chahal because of him. Diving hand touch attempted on the right cover. Sumit and then gets the toe touch. 1 point. So nicely done. Jersey number 1 out. Strongest of an effort, then the easiest of one gets you a point. जी हाँ, बहुत अच्छा फ्लाइंग पॉइंट कह लीजिए आप, फ्लाइंग टच का यहाँ पर प्रयास करना चाहते थे और उसके बाद स्मूथ टो टच। क्या बात है नवीन, यानी कि इनके पास जो स्किल्स दर्शा रहे हैं, अब जरूर शायद एक सब्सिट्यूट होता हुआ नजर आएगा। एक खिलाड़ी यहाँ पर आपको बाहर जाते हुए नजर आएंगे, सोनू लठवाल, और नंबर 2 जर्सी टिंकू अब अंदर आते हुए नजर आएंगे। नवीन, अब छोटा सा जिस तरह से हम बात कर रहे थे यहाँ पर डाइट के बारे में, तो नवीन आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ डाइटिशियन। क्या आप मुझे भी मेरा प्लीज डाइट प्लान शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा वेट गेन कर लूं। No, कुछ नहीं वहाँ पे डाइटिशियन के बारे में, लेकिन what has he done? 11-8. He's also wanting the bonus here, Ajay Gulia. 11-8-5. Mandeep Ruhal went in for that ankle hold, and then also Rohit Kumar came Periyar across from Panthers. the left cover. Oh my God! It's a super raid. Once again, 3 touch points, and they will want a bonus as well. Periyar Panthers want another bonus. Ajay Gulia was asking for that immediately. There you go. Mandeep Ruhal, and then it was also Ajay Narwal coming in from right cover, Rohit Kumar from left cover. So 3 touch points. They want a bonus also. पेरियार पैंथर का मांग है बोनस प्लस 4 अंक, जबकि हमारा निर्णय है यानी कि 3 अंक। कृपया रिव्यू करें। सुपर डुपर रेड की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, बोनस प्लस 4, यानी कि 5 पॉइंट की मांग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो टच था वो विशाल चहल का था। देखिए यहाँ पर उन्होंने इनके पोजीशन से प्रयास किया था एंकल होल्ड का, देखना होगा कितना अंदर जाएंगे। क्या वहां पर बिल्कुल सही रिव्यू हो सकता है नवीन, ये क्या ये यहाँ से रिव्यू इस मुकाबले को पलट सकता है, ये पलटवार की शायद शंखनाद है। Fabulous bit of a review. See, when you can take such reviews, why make childish and kiddish decisions on taking those review for a bonus point which does not have any impact on the match? This is a beautiful review. This is what we want to see. This is a classic example of how to take a review. Put it up there. And what was necessary for Vishal Chahal to go in for that ankle hold? Yeah, trying to be over adventurous, goes in for that ankle hold, and then also gets Mandeep Ruhal. Mandeep Ruhal goes for the reverse leg. No, does not get it. Rohit Kumar comes for the dash, hits it hard onto the back of Ajay Gulia. No, does not happen. The block comes in from Ajay Narwal. No, that is also nullified. And Ajay Gulia crosses the midline. He just asks him to leave the hand. Ajay Narwal was holding his hand, and then he was just pushing him away. So, bonus plus 4, a 5-point raid, and that will probably wipe out the Hampi Heroes and then put Periyar Panthers right back. 1-8, 11 and 5. सफर रहा 4 point. Vishal Chahal
Ajay Narwal, Rohit Kumar, Mandeep Ruhal, 5-point win, and that is put the Periyar Panthers right into the war tank. It's लेकिन not the नवीन शायद driver's बोनस seat. नहीं दिया गया है, 4 पॉइंट जरूर दिए गए हैं, Yeah. पेरियार ये पैंथर देखना होगा। Yeah. No bonus. यानी कि I 4 think पॉइंट there's हो no सकते हैं। bonus. I think, yeah, 5 points. Okay. सुन ले भाई, कैच लेगा तो कैच मार दियो, लेकिन डबल तबल ना डगल जाए, ध्यान रखे लिए बात का, सिंगल जा सके है, इस बात का ध्यान रखे लिए, कभी बुग्गी दे दो। और सुन, उड़ाती दोया में इस ध्यान दिया, डाई खा जाएगा, दोया में ध्यान रखा है, अरे अटैक यू ना लिए पासा डाई मारेगा, ठीक है। अरे हल पर क्या करे यार, तू टाइट है नहीं, तेरा पसीना ही नहीं थोड़ा सा भी, मेरे हद कर रहा। That is love. That is the love of the coach. अगल I like that. I like that. So Boogie, Arshit, actually means 2 points, right? So it means 2 points. So bonus +1 or super tackles. So anything that comes in pairs is called Boogie. Okay, that is what Surinder Saab does not want it to happen. And Nitin Dhankar should not be getting a Boogie. That's what he said. And he said to somebody that you haven't even sweated. I think Arshit, Yes, it was you. और इसी के साथ मुझे एक और लाइन यहाँ पर याद आ गई, पर चलिए नितिन धनकर यहाँ पर पॉइंट प्राप्त करेंगे। कोच ने कहा था कि चलिए आप इस तरह से गलती मत कीजिएगा, 2 पॉइंट मिले हैं नितिन धनकर। इसलिए सबसे बड़े रेडर्स में जब हम बात करते हैं युवा कबड्डी सीरीज की, इनका नाम निश्चित तौर पर आता है, क्योंकि ये प्रेशर सिचुएशन में जानते हैं। और नवीन, हम पसीने की बात कर रहे थे, स्वेटिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ लाइन्स यहाँ पर याद आई है और देखते हैं कि आप उसमें कितना सहमत करेंगे कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। यानी कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको वहां पर किस्मत से ज्यादा आपका मेहनत साथ देती है, जहां पर अक्षित दुल एक बार फिर से यहां पर ये पॉइंट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। Yeah, very well said. Very well said. And when does that pasina come? No, that's really important. And I will urge you to probably see a movie of Kamal Haasan, which is now making a real big roar. It is called Vikram. And then in the climax, you can probably see another big actor coming in. But the big raider today is Nitin Dhankar. 13 raid points and a super 10 for him. Much needed for the Hampi Heroes. There's another actor which comes in who actually is the original Singham. It is Surya. And because of those Singham movies, Ajay Devgan and Rohit Shetty were remaking the Singhams that in Hindi. But now the Singham from that left corner has been nullified, and Nitin Dhankar also gets more than 2 points, if I'm not sure. Jersey number 6 only out. one. How can that be? Gaurav Chiller went in for that ankle hold, and then Sumit Chiller did not get it, did not cross the midline, and just scared him away. Right, 30 apiece. So I'll just tell that line to you, Harshit, because you spoke about Pasina. What line Surya tells in the last is, there's a rule. He uses another word which I can't use it on air. Yeah, there's a rule here in any jungle or any competition. A man who's hungry cannot be stopped. And if you're hungry, then your Pasina comes out. So you first need to be really hungry for that success, for that points, and to prove something. So your hunger and Pasina goes hand in hand for anything that you succeed. एग्जैक्टली बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बार फिर से आपने इस बात को रिलेट किया है, और जीत की भूख के साथ, वो पॉइंट्स की भूख के साथ नितिन धनकर एक बार फिर से तैयार हैं। वो जीत की गूंज चाहिए, वो भूख चाहिए, और जब तक आपने वो भूत, जिस तरह से आपने बात की भूख की, वो इस बार फिर से यहाँ पर क्या नितिन धनकर एक और पॉइंट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। लगातार गलतियां करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर कवर के खिलाड़ी। एक बार फिर से देखिए नंबर 1 जर्सी पर आप ध्यान दीजिएगा, सुमित चिल्लर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट। Yeah, that's the second time. He's trying against Nitin Dhankar. See, that's also a strategy where we can feel that, you only one defender goes against Nitin Dhankar, so just 1 point given away. But for how long? Because after this, I think there'll be a strategic timeout that will be taken, and they'll have to regroup and rethink and probably understand. Yeah, as we said, there's going to be a strategic timeout, because you just can't keep giving away one single points for Nitin Dhankar, and that also has to be pinned down somewhere. Let's see where that tap will be closed, as Ramesh Saab is talking. बताऊं एक हाथ का छेड़ा का न्यू मैंने को एक हाथ का छेड़ा देख लिया, पहले बता दिया मैंने। हाँ नितिन ने मारा था ट्राई बरका मारे। हाँ 20 तो लागत थोड़ी है।
है वो अगला तला बड़ा बढ़ेगा, कोई दिक्कत ना है। गड़ी लंबी ना मारी, छोटी मार दी है, पाँच है ना, पर मारने दे शेप ना टूटा तो क्या दिक्कत है? अपना दिमाग He just says Nitin Dhankar to put in quick rage. He does not want longer rage. He just needs quick rage. And Bittu Banwala is getting a earful. He's getting a earful from Ramesh Saab saying, "What are you actually doing today? Come on, in the second half, we need a better performance from you. You are my strong right corner." That is so important. But Harshit, in the way of talking about the book, you just I think said one word which is really important. The book became good, but let me put it across. आपको अगर बहुत ही बड़ा जीत चाहिए तो आपका भूख मतलब भूत की भूख होनी चाहिए। क्या बात है नवीन। That's why we call you the super commentator। पर चलिए यहाँ पर सुपर डिफेंडर के तौर पर क्या यहाँ पर नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अंदाज में यहाँ पर आशीष शायद वहाँ पर राइट कॉर्नर से मौजूद थे, डबल थाइस पर गए हैं। और पेरियार पैंथर्स के कोच ने शायद यही कहा हुआ कि अगर आप चाहते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। अगर पेरियार पैंथर्स को पूरे इस मुकाबले में लीड में आना है तो नितिन धनकर को बाहर रखना होगा। अब यहाँ पर डू और डाई रेड है, देखना होगा किसके पक्ष में रेड जाएगी। Jay Gulia will be under a lot of pressure, and because it is just 4 defenders, it's a very good tackle by Bittu Banwala. The talk of Ramesh Saab has ignited him, and it's rubbed him in the right way. Very strong double ankle hold. There we go, and just pins Ajay Gulia down on the mat. Much needed tackle. Vishal Chahal is still there, so he can revive Nitin Dhankar. This is a very lethal combination of it. बिल्कुल, और इस बार फिर से देखना होगा। लीजिए आप, विशाल चहल पॉइंट लेकर आएंगे, रिवाइवल एक बार फिर से अपनी टीम को दिला देंगे। हम्पी हीरोज जर्सी नंबर 3 out. I'm just thinking what will the Murthal Magnets be thinking watching Hampi Heroes play like this. You know, since they are the table toppers, Hampi Heroes, just imagine the Murthal Magnets, who always have the defending champions, of course, and they have 5 to 6 raiders always match ready. And what do you have to tell about this combination? Nitin Dhankar, Vishal Chahal, Sonu Latwal, man, and just they are, I think, the best team now to give a Murthal Magnets their run for their money, because against Umesh Pawar, Akash Deshwal, Sandeep Kumar, Mandeep Kumar, and Sachin Pahal, they're all good raiders for Murthal Magnets. And this is what the contest we need to see. This is the contest that we need to see. हम्पी हीरोज की तो उनकी डिफेंस भी अच्छा है। इस बार विशाल चहल की डुबकी काम आएगी। इस सीजन में इन्होंने डुबकी किंग अगर इन्हें ताज दिया जाए तो शायद अभी तक गलत नहीं होगा, पर जिस अंदाज में इन्होंने डुबकी का सही उपयोग लगाया है, जिस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने डुबकी लगाते हुए देखा है, पर बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी डुबकी का दर्ज कराया है। और हम बात करते हैं हम्पी हीरोज की, तो मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जो हम्पी हीरोज की डिफेंस में अभी भी जतिन वत्स, उन्होंने इससे पिछले मुकाबले में 5 पॉइंट प्राप्त किए थे। उसके बाद उन्हें स्टार्टिंग 7 में मौका नहीं मिला, यानी कि डिफेंडर्स भी बहुत ही लाजवाब हम्पी हीरोज की टीम में आपको नजर आते हैं। एक अच्छी बैलेंस साइड नजर आती है पेरियार पैंथर्स, हम्पी हीरोज, मुरथल मैग्नेट्स और भी बाकी सभी खिलाड़ियों की अगर हम बात करें। Oh yes. And Bittu Banwala is gone in for that pursuit, super tackle situation. He has to be very intelligent. He should not commit any error. He did not commit any error. Gaurav Chilla was taken by surprise. And he has to go back on the bench. What a talk did Ramesh Saab have with him. जी बिल्कुल, अब जरूर खुश होंगे थोड़ा सा। बढ़िया भाई, कुछ तो शाबाशी वाला काम आज शायद बिट्टू करते हुए नजर आ रहे हैं, कोच यही कहेंगे। पर चलिए अब देखना होगा पेरियार पैंथर्स, यहाँ से अक्षित धुल पर होगी अब जिम्मेदारी। रिवाइवल चाहिए होगा यहाँ से। अगर यहाँ से नवीन अक्षित बतौर रेडर क्या पॉइंट के लिए जाना चाहिए या फिर वापस जाएंगे, तो महज 2 खिलाड़ी मौजूद होंगे। आपके मुताबिक क्या करना उचित रहेगा? बोनस पॉइंट पेरियार पैंथर। See now Ashish Narwal will try and get it out. Very quick rage. And Ramesh Saab said the same thing. Go in, put quick rage. That is what I need. Just do not spend a lot of time. And if you ask me how Periyar Panthers need to come back, and they have to first save this all out. That's really important. As we have a substitution, Ravi goes out, and I think this is going to be Ankush Lohan coming in once again to save his team, because in the previous occasion in the first half he was unsuccessful. He was being tackled out, but now he has to get a touch point, no doubt. If he does not, Harshit, it is bye-bye for the boys in black. That's it. This match is going to go down. I think that's it. Very strong dash.
And that's a second all out on the Periyar Panthers by the Hampi Heroes. And that has come in the second half. So, for your movie to be successful, your second half has to be really strong. And Hampi Heroes have got a blockbuster out of this match already. जी हाँ, उस तरह से उन्होंने वापसी की है। जरूर अब टाइम आउट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। 6 पॉइंट की लीड यहाँ पर हम्पी हीरोज के पास है। पेरियार पैंथर्स को अब इसी तरह से वापसी यहाँ पर करनी होगी। देखना होगा क्या कहते हुए नजर आएंगे यहाँ पर कोच साहब। 4 in अपनी रेड है ना 13 out बढ़िया ही ट्राई लिए। ओए रेडर दोनों ट्राई लेंगे 5-6 मन बोनस तो जाने दीजिए। ठीक है, और डिफेंस बढ़िया खेलना है। इजी कैच मारियो। हाँ, गणी बोनस का चक्कर मार रही है। अगला क्या जाएगा झूठा सच है, लात भी लग गए सीधी वो कवर गला को तो अपनी रेड मार सकता रहा। कोई दिक्कत नहीं, बेसिंग कैच लग जाए हैं अपने दिमाग की अपनी रेड मार के। हाँ, हाथ भी लग गया लगे क्यों गया बतला बढ़ गया तला रहता है। और लाइन भी पहले 10 सेकंड रन है विशाल 10 सेकंड रन काटा फिर रेड सॉरी। Lovely. Now he wants to slow down the pace of the game. First he said go, put in quick rage, and now he says go in, come back in those last few seconds of the raid. Stay there and control the game. Wow, Ramesh Saab, beautiful techniques as per the game's situation, and that's what Nitin Dhankar will do. Harshit, he will go in. I should have spent more time. He should have just spent more time. Sumit Chiller once again gets out, trying to go back this time, and Vishal Chahal, I think he's got him thrice in this second half. नितिन धनकर को वहां पर पॉइंट मिला है। सुमित चिल्लर को यहाँ पर बाहर की तरफ एक बार फिर से भेजा है। पर नवीन, एक और बात उन्होंने बहुत सही यहाँ पर बोली थी कि बहुत ज्यादा अंदर जाने का प्रयास आप निश्चित तौर पर नहीं करना चाहेंगे, पर नितिन को उन्होंने यही कहा था कि भाई तू तेरे दिमाग से खेल। यानी कि कई बार कोचेज इस समय पर अक्सर बहुत ज्यादा गाइडेंस या फिर आप बहुत ज्यादा कुछ बताना चाहते हैं अगर खिलाड़ियों को, पर यहाँ पर रमेश साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि भाई नितिन तो तेरे दिमाग से खेल, तू अच्छी तरह से गेम को जानता है। और विशाल चहल को कहा था कि विशाल चहल भाई तू तेरा बेस्ट दे और एक और बार यहाँ से पॉइंट मिलेगा। जर्सी नंबर 4 आउट, यानी कि अब यहाँ से मुकाबला में वापसी आने का पेरियार पैंथर्स का मकसद थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। रवि की यहाँ पर चूक नजर आई है कवर से। Once again, Hampi Heroes will probably want a bonus. Yeah, bonus +1. Yeah, as I expected. Yeah, come on. हम्पी हीरोज का मांग है बोनस प्लस 1 अंक, जबकि हमारा निर्णय है सिर्फ 1 अंक। कृपया रिव्यू करें। Okay. So I'll just speak about Ravi. That's fine if there's a bonus or no. Hampi Heroes are anyways leading this, and it probably looks very tough. Very tough. Sorry, probably they'll lose the review because he's cutting the black line. He's not over the black line. He's just sliding his foot in, and that's not allowed. You have to be clearly review unsuccessful. Only one frame was enough for the TV umpire to make his decision. And now imagine Hampi Heroes have lost the review for a small little bonus. And what if there is a lot of time in this game? 2 minutes 30 seconds is a big time. And what if there is a very crucial situation to get the review out? What will they do during that occasion is my question. Hopefully they don't get into that situation. This point will go to once again number 1. It is Vishal Chahal who will get the point, not the defender who blocked him. There you go. Mandeep Ruhal blocked him, but Vishal Chahal and along with Ajay Narwal should probably get those assist points. But Ravi is a big concern here, Asif, for Periyar Panthers. बिल्कुल आपने सही कहा। देखना होगा एक बार फिर से नितिन धनकर को पॉइंट यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। और पेरियार पैंथर्स की टीम एक बार फिर से जो हम बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे कि शुरुआती फर्स्ट हाफ में आपके पास 6 पॉइंट की लीड थी, उसे आप कंसोलिडेट नहीं कर पाए। यानी कि नितिन धनकर का इस बार फिर से लाजवाब प्रदर्शन और एक बहुत ही हाफ हार्टेड अटैक करते हुए नजर आए, जिसमें शायद कोई इंटेंट वहां पर नजर आया नहीं। अजय पंडित द्वारा वहां पर गए थे। See the reason why they are on the 4th place with this match going down, probably with a 10-point difference, and they will not probably get a single point out of this game as well. There you go. What a strong tackle. Surprising. That was, and it came out of nowhere. Hampi Heroes. My God, it just came out of the covers. Is it? No, it's from the left in. Came out from left in. It was Tinku until then he was quiet, but then he's got that single point. And once again, Nitin Dhankar takes a point. So the reason why Periyar Panthers are on 4th place and struggling is because their defense has not come together well. And Gaurav Chiller, the skipper, he was actually starting off as a cover defender. Okay? And suddenly they've got Sumit Chiller and Ravi. Ravi is becoming a big
cause of concern. They have to understand that they'll have to pin that gap very, very soon. They'll have to get that ironed out. You cannot carry on like that in the challenger round. And probably this game going down, you might even go down the points table. And being on 5 and 6 will not help you. See, once again, Bonus somewhere plus 1 Gaurav Chilla point. saves his team. Periyar Panther, jersey number 8 out. जी हाँ, इस बार जरूर यहाँ पर जर्सी नंबर 8 को अपना शिकार बनाएंगे। और बिल्कुल आप जिस तरह से यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे नवीन की, वो कवर पोजीशन यहाँ पर एक चिंताजनक विषय रहा है। अब देखना होगा नितिन धनकर का क्या यहाँ पर सुपर टैकल नजर आएगा। ये अच्छा स्ट्रगल नजर आएगा। नितिन धनकर पूरा अपना एफर्ट दर्शाएंगे और लीजिए, ये इसी वजह से इन्हें कहा जाता है नितिन धमाकेदार धनकर। लाजवाब एफर्ट यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ ऑल आउट कर देंगे। यहाँ से 4 पॉइंट यहाँ पर नजर आएंगे इस रेड में। सुपर टैकल के लिए पूरी तरह से माहौल बन गया था, ऐसा नजर आ रहा था, पर ये फोर्स देखिए ताकत का। Absolutely. See, what worked well in Nitin Dhankar is he got up, turned his waist and then went ahead. But somewhere Sumit was holding the ankles and you will have to give it up for Gaurav Chilla. He should have just gone in for the shoulders instead of the back. You got the back, that's fine. But then when Nitin Dhankar was trying to get up, you would have gone for the shoulders. See, these are the small little changes. It's nice to talk from the commentary box, but probably on the Kabaddi mat, they will probably be backing their skills and doing it on that fraction of a second. But it was a very good struggle, has to be said. Nitin Dhankar gets that all-important all-out. And then Vishal Chahal now comes back for the last raid of this game. 50 points for Hampi Heroes. Big worry is the covers of the Periyar Panthers. The corners are fine, but you will have to, or if you are thinking, if Surinder Saab is thinking, Gaurav Chiller is a good, look at that once again, the covers, Sumit Chiller, right cover, 2 points, another Dubki, very easily got in, and 4 out. Vishal Chahal, and 52 points for Hampi Heroes, a massive victory, and stay on the top of the points table very comfortably, the Hampi Heroes. Very happy will be Ramesh Saab with the smile, always gets the smile for the last frame of the camera. Yeah, he knows it. Before that, he does not smile at all. बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं कि अंत भला तो सब भला, और वो मुस्कुराहट अंत के लिए बचा कर रखते हैं। जानते हैं कि टीम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना चाहेगी और हम्पी हीरोज ने एक बार फिर से दर्शा दिया कि क्यों इनकी इतनी लाजवाब टीम कही जा रही है। रेडिंग ड्राइव बहुत कमाल है, आपको डिफेंस में नजर आते हैं। मनदीप रूहाल का आज बहुत अच्छा कप्तान के तौर पर प्रदर्शन रहा है और डिफेंडर के तौर पर और भी लाजवाब बिट्टू बनवाला का लाजवाब प्रदर्शन और 52-37 से इस मुकाबले को जीता है हम्पी हीरोज ने एक दफा। जी हाँ, यानी कि फर्स्ट हाफ में अगर हम बात करें तो वहाँ पर 6 पॉइंट की लीड पेरियार पैंथर्स के पास थी, पर बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर लीड को पहले कम किया और उसके बाद स्वयं की टीम के लिए लीड बनाई। पेरियार पैंथर्स के डिफेंडर्स के लिए अच्छी शुरुआत रही थी। शुरुआत में आते ही एक बार लगा था कि गौरव चिल्ला राज फॉर्म में है, आशीष चिल्ला राज फॉर्म में है, पर उसके बाद यहाँ पर इस कबड्डी के मैच पर एक बार फिर से पलटवार हुआ और हम्पी हीरोज ने बताया कि क्यों वो टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। Yeah, because the covers blew off. When your covers blow off, even if you're in a space shuttle, that will throw you out. A space shuttle is very strong and very safe when you're landing or going outside the Earth's atmosphere. But when your cover is blown off, you cannot survive even in a space shuttle. So that is what happened on the Kabaddi match for Periyar Panthers. Both the covers, Ravi and Sumit Chiller, went on committing those errors, even with that super fabulous raid by Ajay Gulia for 4 points, did not save the Periyar Panthers. So somewhere, if you remember, rather Harshit, since you weren't around in that survival round, I very clearly remember Gaurav Chiller was playing the covers and they had a different corner. And now it's Gaurav, look at this. This is the struggle of the match. And Nitin Dhankar got those 2 points. All credit to him. And once again, look at Sumit Chiller. So because Gaurav Chiller is playing well, he's been pushed to the corner because they don't have a corner. And now their covers are just blown off. Not a right way. And even if you just compare the raid points for the Periyar Panthers, that is much lesser than the Hampi Heroes. The Hampi Heroes won it on that raiding itself. And then to topple upon, it's the tackle points also for the Hampi Heroes that has come on well. So if you do not have a strong defense, you're going to struggle, the Periyar Panthers. And remember, you do not have Ashish Narwal this time. एग्जैक्टली वहां पर आपके लिए द बिगेस्ट पैंथर मौजूद होंगे नहीं, पर निश्चित तौर पर यहां से वापसी करना चाहेगा अगले मुकाबलों में। पेरियार पैंथर्स अच्छी टीम है
अजय गुलिया, अजय पंडित, और अगर हम अक्षित की बात करें तो अक्षित आज उस तरह से प्रदर्शन जितनी उम्मीद थी उस तरह से दिखे नहीं, परंतु आप चाहेंगे आने वाले समय में अच्छा खेल का प्रदर्शन को दर्शाएं। आज भी सुपर 10 बनाया जरूर, पर आप आगे उनसे और भी बेहतर प्रदर्शन देखना चाहते हैं। हम्पी हीरोज एक बार फिर से Yes. I want to ask you, Harshit, there are two good raiders, Nitin Dhankar and Vishal Chahal. So yeah, this has gone to Nitin Dhankar for their 18 points. But Vishal Chahal actually in the second half was very fiery. He came back strong and he put in those quick raids and also helped out Hampi Heroes to inflict the all out, isn't it? एग्जैक्टली बहुत अच्छा वहां पर सेकंड हाफ रहा। नितिन धनकर की हमने बात की, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, पर देखना होगा डिफेंडर्स में किस पर आपकी नजरें जाने वाली है, जानते हैं नवीन आप ही से। Yep, Mandeep Ruhal, the skipper, he did well, but Bittu Banwala also did well. See, when you can only pick one defender or one raider for the graphical representation, when you talk about the other raider and other defender, that shows the team has done really well. And this is a team game, Kabaddi. We've been telling this. So you need to have one, not more than 2 or 3 heroes. So you need to have 2 or 3 heroes here to win a game. And it's a 15-point strong victory for the Hampi Heroes. And now next up, Kaziranga Rhinos will be taking on the Aravali Arrows. And then at 4 p.m. you have the strong Murthal Magnets taking on the Panchala Pride. 2 lovely games coming up. At 2 p.m. we have the Aravali Arrows versus the Kaziranga Rhinos. And just we will slip into a short little break, but do come back very soon with Harshit for the post-match presentation of Hampi Heroes and Periyar Panthers. Thank you, Harshit. It was always fun talking to you, and thank you so much everybody watching live on Fan Code. वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 55 बूस्टर राउंड डे नंबर 3। एक और बड़ा ये दिवस है और एक और बड़ा मुकाबला यहाँ पर हमें देखने को मिला। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का। सीधा चलते हैं सबसे पहले धन्यवाद करने हमारे पार्टनर्स को। और पार्टनर्स ड्रीम 11, ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड, फिजियो पार्टनर यूईएम, वॉइस ऑफ कबड्डी रेडियो सिटी 91.9 FM और हेल्थ केयर पार्टनर जेनेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये बड़ा मुकाबला था और इसमें यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। द प्रेजेंटेशन टुडे वी हैव मिस्टर तेज नारायण माधव सर, लीड ज्यूरी,
युवा कबड्डी सीरीज। स्वागत है सर तहे दिल से आपका। और इस मुकाबले की तरफ चले तो बड़ा मुकाबला था, द हॉटेस्ट राइवलरी जिसे कहा जाता है युवा कबड्डी सीरीज, द मैच बिटवीन हम्पी हीरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स, जहां पर बाजी मारी है हम्पी हीरोज ने। सीधा चलेंगे अवार्ड सेक्शन की तरफ, बात करेंगे सबसे पहले बेस्ट रेडर की। तो एक बार फिर से धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ही इज नितिन धनकर फ्रॉम हम्पी हीरोज कलेक्टिंग 18 पॉइंट्स। लेट्स सी क्या उन्होंने कारनामा किया है। तो चलिए अब समय है बेस्ट डिफेंडर की बात करने की। एक बार फिर से कप्तान फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड करते हुए नजर आए। तो चलते हैं बेस्ट डिफेंडर की तरफ। ही इज मनदीप रुहार फ्रॉम हम्पी हीरोज कलेक्टिंग 4 पॉइंट्स और उनकी शानदार टैकल अब आपकी स्क्रीन पर। और चलिए अब इस मुकाबले में हमें बहुत सारे लाजवाब मूव्स यहां पर देखने को मिले। तो चलते हमारे नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, यानी कबड्डी का कमाल अवार्ड। और मूव ऑफ द मैच के चलते ये अवार्ड दिया जाएगा अजय गुलिया को फ्रॉम पेरियार पैंथर्स। लेट्स हैव अ लुक। So thank you so much for joining us. एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। This is all from the post match presentation.